अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, बखैर अगलास बोलते हैं आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, टाइट होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अच्छे मूड में होंगे, स्वस्थ होंगे। ये सोन में हम लोगों का होस्ट कुदरत गुगली होंगे और ये है साहिल अफगान। गुगली बस बाली कभी ये ला रहा है इसमें। तो आप यूं कर रहे हो, आपका मतलब क्या है जो गुगली बोल रहे हो? गुगली होंगे। गुगली हो ये भी एक बात है क्यों नहीं होगी? क्यों बात नहीं? ये एक बात है की बात है, क्यों नहीं है बात? तो आज हम लेकर आए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि काफ़ी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो भी है और हमें बताएगा कि कौन से प्रूफ है 11 प्रूफ्स इंडिया इज नॉट लाइक एनी अदर कंट्री। ये बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। वॉच करता है इस वीडियो को। वॉच करने से पहले हमारे चैनल अपन रेटर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा। लाइक जरूर क्या करें ताकि हमें पता चले आप लोगों से कितना सपोर्ट मिल रही है। और हाँ, अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, यू कैन चेक देयर। लेट्स स्टार्ट इंडिया। Hey everybody, simple question for you. Who doesn't love travel? Well, I sure do, and I've been to a lot of different countries, but there's one that will stick with me forever, India. Like I said, I'm pretty well traveled. I like to go abroad at least once a year, so I've got a lot of trips under my belt. But when a friend told me that I just have to see India, well, that's exactly what I did. I went in September, the last month of the summer monsoon. It was pretty dry and sunny, but with short rains here and there. The perfect weather for a traveler, if you ask me. Being the confident and well-experienced globetrotter that I am, I went there prepared, and I thought I was ready for anything. Boy, was I wrong. The colors, the contrasts, the pace, the people, everything hit me like a ton of bricks and didn't let go even when I was already back home. As soon as I stepped out of the airport, I felt dizzy. It could have been the heat, the jet lag, or the hunger in my belly. I assumed it was the latter, so I decided to head out for some authentic Indian food as soon as I throw my bags in my hotel room. Now, the food there deserves a big shout out. First of all, Indians eat very little meat. In fact, they have the lowest meat consumption per person in the world. Most of their dishes are vegetarian, and meat is replaced with soy meat. This is mostly because 80% of the population is Hindu. Probably like you, I'd always heard that Hinduism requires a strictly vegetarian diet, but that's not the case. It's just because they believe not eating meat minimizes the hurt they bring to other living beings. That's definitely one of the things I learned during my travels, and I was pleasantly surprised. Another thing about food in India is that it's all heavily spiced. That comes as no surprise, really, since India is well known across the world as the biggest spice producer and exporter. But there's one region that stands out exclusively in this regard. Sure, this flower isn't unique to India. It also grows in Iran and Spain. Kashmir, however, produces the highest quality and the most expensive saffron in the world. The town of Pampore is literally built around saffron fields. There are actually 3 varieties cultivated there. There's Mongra, the most expensive one, that costs about $1,600 a pound. Then you've got Lacha, which, interesting enough, is less pricey at $1,000 per pound. Yet saffron farmers say it's the purest. And finally, there's Zarda. It's the cheapest, but only compared to other varieties, because $250 a pound isn't exactly what I call cheap. Anyway, India's spice game is definitely on point. So, I found a good place to eat, and as soon as I saw the menu, I remembered that Indian is also famous for its large variety of tea, or as the locals call it, chai. You should see the sheer number of options. I never thought there could be that many types of tea. If you're a tea drinker, I'm sure you know Darjeeling and Assam, but have you ever heard of Karnataka or Kangra? Does Munnar ring a bell? I don't blame you. I had no idea that these kinds exist either, and those are just the tea-producing regions. There's even more once you get into the types of chai by adding particular spices and herbs. Take, for example, masala chai, which is made with cinnamon, ginger, cloves, and herbs. I personally fell in love with butter tea. It's so thick and creamy. I could drink it by the gallon. Basically, you take tea leaves, some butter, hot water, and salt. Mix it all up and thank me later. With a full belly and plenty of chai pumping through my veins, I was ready for some sightseeing. I landed in New Delhi, so I spent the rest of the day walking around and taking in all the sights. Whenever I go abroad,
I like to carry a little phrase book in the local language. Phrase book जो है। Well, if you ever find yourself in India, you're gonna need a really big book because there are actually 22 officially 22 recognized languages languages, there. wow. English is among them, so I was okay just sticking to that. But those 22 official languages are just a drop in the huge linguistic ocean of the country. By different accounts, there are from 122 to 300 major languages spoken in India, as well as up to 1,600 lesser known ones. Wow. Basically, if you travel from one town to another, you'll hear people talking a different language. And if you happen to go to another state, you can forget everything you might have learned in your previous location. How they manage to communicate with each other is still beyond me. New Delhi was awesome. I wish I could talk more about it, but I had a lot to see. I did find time to take a train up to Amritsar and see the Golden Temple. How do I even begin to Golden describe Temple. it? The whole thing is covered in gold Oh. and sits in the middle of a huge pool of water. Dora. This is where the tradition of langar Yeah, takes langar. place. Langar is a vegetarian meal that's given to any and everyone who comes to the temple, regardless of their background or beliefs. Just Laban imagine, सीख मिलता the है। Golden Temple provides a free सब meal कुछ to सही over बता रहा है। 50,000 people a day. 50,000 people And को on daily special देते हैं। occasions, it can feed up to 200,000. Special occasions में I got a फिर free 2 meal lakh लोगों को too, देते हैं। and it was really delicious. You can volunteer there as well. I did just Skin that with the type of because guy I was that in was so much making? awe about the place, I didn't want to leave. What I actually regret is that I didn't get to see the Kumbh Mela in action. It's one of the greatest celebrations of Oh, India, ये and तो है। apparently it's a sight to behold. In 2011, so many pilgrims gathered in one place that the whole congregation of 75 million people was 75 even million visible people. from space. This year, it's taking place from January until early March. Oh. So if you've seen it with your own eyes, just know that I'm so jealous. In मतलब fact, ये उस वक्त नहीं whatever गया था जब ये India होता है। does, it does it on a huge scale. For example, it has the largest number of post offices in the Oh. world. Wherever you go, you'll stumble upon one Yeah. literally on every corner. Post The irony of this is that it doesn't really help the situation with delivery times. One Indian guy told me it's totally normal to wait for your package to be delivered in 2 weeks' time, Oh. even if it was sent from a nearby town. But hey, patience is a virtue. पेशेंस रखना चाहिए। But it doesn't stop there. India places third in terms of the number of Guinness World Record holders, the Cinema world's पे। fastest nose typer, the most expensive wedding ever Oh. held, and the most selfies taken together are just a few of ये the सब bizarre जो world record records बनाया। held in this country. What else? The largest railroad network in the world? Check. Well, almost, since the United States does technically have more. But anyway, India has built over 3.5 million miles of railroads, यार railroad, which, हमें पता था। considering the smaller size of the country, still means easier transit within and between different locations. With that in mind, it shouldn't really be a huge surprise that Indian Railways is also the largest employer in the world. Employees भी It ज़्यादा has है over इसमें। 1 million employees. Million And employees considering the इसमें। country's अभी और extensive railway बताएगा, ये network, तो सिर्फ these इन्होंने कम people are बताया। scattered throughout India. क्योंकि अभी और From भी the बनना है smallest ना। villages जेनी to पर- the biggest cities, the number of jobs grows every year. Jobs So it looks भी like ज़्यादा you could बढ़ते हैं ना, always कम get a जगह job भी। there if you're looking for employment in India. Anyway, what can I say about my final impressions? I was blown away, and I seriously didn't want to leave this fascinating place. Visiting it was like going to a whole new world for me. I tried to get as many souvenirs as I could, but I almost forgot one important thing. If you ever go there, by the way, you'd better remember it too. No one is allowed to take India's national currency in or out of the country. Oh, It's but actually listen- against the law, but so make listen- sure you change your money before you cross the border. I Wow. almost made this mistake, but a friendly local told me to exchange my rupees at the airport, and off I went. Headed back But home with my listen, suitcase full of listen, exotic listen. stuff and my head pulsing with impressions. नहीं लगता ये USB तो वगैरह भी बहुत चीजें जो अभी बता रहा है। अच्छा पहले क्या था Can you tell me anything else about India that I missed? I'm definitely going to go back. So leave me some recommendations down in the comments too. And if you enjoyed hearing my story, then give this video a like. Yes, Share it with वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो। अच्छा ये तो मानना पड़ेगा कि इंडिया में जो ट्रेन के जो बिछाया गया है, मुझे वो तो ट्रेन का भी हाँ। बताया, ज़ाफ़रान वगैरह 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 हाँ, कि कुछ saffron। चीजें यहाँ से यूं गुजर रही थी ना मुझे। वो तो इंग्लिश बोल रहा था ना, तभी इंग्लिश बोल रहा था तुझे तेरे चाय के बारे में बताया, ज़ाफ़रान जो कुछ ज़ाफ़रान के साथ कुछ और चीजें भी बताए थे।
पता नहीं जर्दा और इस तरह कुछ वो चीजें तो मेरे ख्याल से उनके जो है तो तीन किस्म के होते हैं। एक जो है $1600 बहुत ही महंगे थे यार ये सेफ्रॉन जो है कश्मीर में सेफ्रॉन जो है हमें जो है वर्ल्ड वाइड बहुत कम ममालिक मतलब कंट्रीज में जो है पाए जाते हैं, इस वजह से बहुत महंगे। ईरान में होते हैं, कश्मीर में होते हैं, अफगानिस्तान सबसे हमारे अपने अफगानिस्तान में होते हैं, स्पेन में होते हैं। स्पेन का मेरे ख्याल ज़ाफ़रान से ये लोग लेते हैं। वैसे तो हम लोग सिर्फ ज़ाफ़रान की बात कर रहे हैं, बाकी चीजें भी तो बताए थे ना। अच्छा चाय, असम की चाय मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा फेमस है। चाय या असम के मैंने भी सुना था, लेकिन यहाँ भी और भी बताए, ये बंदा जो था ये मसालों के बारे में बताया, फूड्स वगैरह। ये बंदा जो है आउटसाइडर तो फॉरेन से आया और कह रहा था कि मैं जब आ गया पे देखा, जिस तरह माहौल देखा, लोगों को देखा, मैं हैरान है कि किस तरह जगह है। मतलब वो बिल्कुल हैरान हो गया। उसने जो रेल के बारे में बताया गया था कितनी ज्यादा ट्रेन है। अच्छा कह रहे थे कि एम्प्लॉयज का जो है मतलब मिलियंस एम्प्लॉयज जो है सिर्फ ट्रेनों में है, मतलब और भी अभी आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे तो इन्होंने तकरीबन 11-12 चीज़ों के बारे में बताया था ना। वैसे अगर देखा जाए बहुत से ऐसी चीज़ें जो कि बाकी मतलब कंट्रीज में नहीं है, बिल्कुल बहुत से ऐसे, जिस तरह के अभी हम क्या क्या बताए, मतलब हर चीज़ अगर देखा जाए इंडिया में नोट किया था, सिर्फ वही बताए थे। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, नौकरियों के मतलब जॉब्स मिल जाते हैं क्योंकि काम ज्यादा हो रहा है। आगे जो है टेक्नोलॉजी बढ़ रही है इंडिया में, जो है आईटी के लिए और मेडिकल भी ज्यादा बढ़ रहा है, इस वजह से जो है अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। तो पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है, अब जो है बहुत ही आगे चल मतलब यही बंदा यही कह रहा था कि यहाँ पे जो है मतलब जॉब्स लोगों को ज्यादा मिल रहा है अभी क्योंकि और काम आ रहा है। जिस तरह वो ट्रेन का सिर्फ बता रहे कितने ट्रेन वगैरह जो है अगर तो आप खुद सोचो कि कितना ज्यादा हुआ होगा, मतलब लोगों को एम्प्लॉय मिलते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा जो है चाय के बारे में, अच्छा चाय था वो मसाले वाली चाय थी, वो कह रहे थे वो जी मतलब अजीब लगा मसाला पता नहीं वो किस तरह हमें बताएगा जरूर किस तरह बनती है, कौन पिलाएगा वो चाय। हाँ कौन पिलाएगा हमें, ये भी है कौन पिलाएगा हमें, वो हमें बताएगा। तक हम लोगों ने टेस्ट भी नहीं किया उसका क्योंकि मसाले और दूसरा जो एक बटर का भी था, उसमें बटर यूज होता है, मक्खन, समझ गए, मक्खन कुछ पश्तो में हम लोग कुछ बोलते हैं। यस तो वो भी उसकी ये बहुत ही अच्छी वीडियो थी, बस खत्म कर बनती है ना बनती तो है, मतलब यहाँ भी तरह तरह की बनती है, लेकिन वो जो मसाले वाले चाय थी हम सुन रहे हैं। ये थी वीडियो, बहुत ही जबरदस्त वीडियो थी। मतलब ऐसी चीज़ों के उन्होंने बताया हुआ था कि बंदा मतलब हैरान हो जाए। मतलब चाय वगैरह का जो है, बाकी जो है सेफ्रॉन का, वहाँ के लोगों का, वहाँ टेम्पल का, लंगर का जो बताया गया था, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें थे। उम्मीद आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल अफगान रिएक्टर्स, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। लाइक जरूर क्या करें ताकि हमें पता चले लोगों की सपोर्ट मिल रही है। तो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।